Hello dear students, welcome back to the channel Zach Economics. In this video, I am going to discuss about the second book of your subject, that is Indian Economic Development. Talking about this book, it contains or comprises of 3 units, and these 3 units are basically the 3 phases from which India has passed over a period of time. The first phase is related to developmental experience, which is from 1947 to 1990 and also includes the 1991 economic revolution of LPG policy, that is liberalization, privatization, and globalization. The second phase or the second unit is about the current challenges which are being faced by the Indian economy in terms of poverty, rural development, human capital formation, employment, infrastructure, sustainable economic development, and so on. Okay, and the next stage or the next phase is about the developmental experience of India, and this is the last unit which talks about the comparative study of India and its neighboring nations. And here, neighboring nations, when we talk about, we are mainly considering two of the nation as per your syllabus, that is Pakistan and China, and we are going to discuss over the issues like growth, population, sectoral development, and other human development indicators. Okay, so before starting this subject, I'll tell you this subject, Indian economic development, is going to give you an insight of how India has endured over a period of time while traveling from 1947 at the time of independence, when it is being called the golden bird, to the present day era. Okay, what all challenges India has faced and what all economic reforms have been occurred over a period of time. Now, the first chapter of this book is about the Indian economy on the eve of independence. Okay, how there is a colonial exploitation under the British rule, what all sectors are being affected, and how the Britishers have captured the whole of economy under their rule, and they have totally demolished or destroyed this golden bird. Okay, mainly they have affected the three sectors, that are agriculture sector, industrial sector, and international trade. Why I'm saying about the first is agriculture sector, because at that time Indian economy is considered as agrarian economy. That means an economy which is where whole of the economic activities are dependent solely on one sector, that is agriculture. That agriculture sector is being destroyed by Britishers through zamindari system. Zamindars are basically the owners of the soil. उनका सारा का सारा कंट्रोल होता, व्हाट दे से, टिल वेयर आई सी द लैंड इज माइन. ओके, दैट इज देयर कंसेप्ट. जहाँ तक वो उनकी नज़र जाती थी वहाँ तक का सारी ज़मीन उनके अंडर कंट्रोल में आती थी. ठीक, एंड दे हैव वन रूल ऑफ थम दैट whatsoever will be the revenue from the land, only a fixed amount will be paid to the government. उसके बाद जितना भी सारा रेवेन्यू होता था, they always take it to their treasury. Now the farmers which work on behalf of them as a mere cultivator or the tillers of the soil, उनको कोई भी तरीके का बेनिफिट नहीं मिलता. They do not get any benefit of surplus from the produce. Only what they get a minimum support survival thing which is being used by the farmers to run their livelihood. ज़मींदार जो है वो ज़्यादातर रेवेन्यू अपनी लग्जरीज पे स्पेंड करते थे, एंड दे स्टार्ट टू एनहेंस देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग by collecting all the extra revenue. So this is the condition of agriculture sector. Now the second is what the sector which they have exploited is industrial sector. Talking about industrial sector, the Indian industry at that time is totally handicraft industry. Whole of the country is dependent on hand labors. जो भी हाथ से बना हुआ सामान होता था उसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती थी, because they have spent lot of time on that. Very important raw material is being used in that. That's why the cost is high, and ultimately that is being sold at high prices in the market. The quality is also very good, but what they have done, this handicraft products are being highly demanded outside the country. So the Britishers, they have put heavy export duties
for destroying this foreign industry, foreign handicraft, for destroying this handicraft industry of India, they have put heavy export duties. तो होता क्या था, जब हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लग गई उस प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भी इंडिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो बाहर जाने पर दे हैव बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव टू परचेज। लाइकवाइज इंडियन मार्केट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने सिंपली क्या किया, इंडिया की इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की मार्केट को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने अपने गुड्स इंपोर्ट किए, ब्रिटिश गुड्स इंडिया के अंदर, जो कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स पे थे। आई हैव रिटन हियर दे आर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स। और जब वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स पे थे तो इसका मतलब वो चीप कॉस्ट पे सेल होते थे यहाँ पे आकर, चीप प्राइसेस पे। और जब सस्ते प्राइसेस पे होते थे तो ऑल द कंट्री सिटीजन दे प्रेफर ब्रिटिश गुड्स एक्सेप्ट दैट वी कॉल्ड इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स। ओके, तो आज का भी जो ये नारा है मोदी जी का, लोकल में वोकल वाला नारा, व्हाट इज दिस? टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंस। We should not be dependent on the goods which are being imported from outside, but we should make goods that will be easily available to the customers of India, and it will ultimately add up to the domestic growth of the economy. Okay, now international trade, when I talk about it, is regarding the export and import, how Britishers have exploited this sector, the international trade thing. तो उन्होंने क्या किया, जितना भी रॉ मटेरियल इंडिया में था, इंडिया वॉज अ रॉ मटेरियल रिच कंट्री एज आई हैव टोल्ड यू, तो उन्होंने जितना भी रॉ मटेरियल था वो अपनी कंट्री में ले जाना शुरू किया। और अपनी कंट्री में जब वो ले जाते थे, दे हैव डन फ्री एक्सपोर्ट ड्यूटी। दैट मीन्स देर इज़ नो ड्यूटी ओवर एक्सपोर्ट्स इफ़ यू आर एक्सपोर्टिंग एनी काइंड ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। ठीक, तो जितनी भी कंट्रीज थी, बड़ी बड़ी कंट्रीज, उन्होंने इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया। और क्योंकि ड्यूटी फ्री ब्रिटिशर्स ने कर दिया था, रूल उनका था, देन एवरी वन गेट द रॉ मटेरियल्स एट चीप कॉस्ट। ओके, लाइकवाइज उन्होंने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स कर दिया अपने गुड्स का, यानी जो ब्रिटेन में गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे थे वो इंडियन मार्केट्स में इजीली इंपोर्ट हो सकते थे। जो भी इंडिया का आदमी चाहे वहाँ से मंगा सकता था, दे डोंट हैव टू पे एनी काइंड ऑफ ड्यूटी। अब इससे क्या हुआ, जब ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हुआ ब्रिटिश गुड्स का, तो ब्रिटिश गुड्स आर वे मोर चीपर एंड दे हैव डिस्ट्रॉयड होल ऑफ द इंडियन मार्केट, एंड द इंडियन डोमेस्टिक production is worthless in terms of British goods. So these are the three sectors which are being totally exploited, and this is a kind of colonial exploitation, as I have written over here, which targeted three of the major sectors of the economy. The first one, agriculture sector; second one, industrial sector; and the third one, international trade sector. Okay, so this is all about the first topic, colonial exploitation under British rule. Okay. Thank you, class. Subscribe the channel, press the bell icon, and we'll meet in the next video.